कि ऑर्डर जीरो था, कुछ भी नहीं होगा उसमें, कंसंट्रेशन को जो मर्जी कर दो, द रेट रिमेन्स कांस्टेंट. So as the concentration decreases, the reaction just happens with the same gradient. The speed does not change. फिर mechanism का पढ़ा था, उसके बाद we studied के everything depends on the slow step, which is the rate determining step. So I told you that anything that's involved in the slow step, its order is one. और जो भी उसका slow step का exponent होगा ना, नहीं exponent नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, the coefficient becomes the order. यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, हाँ, coefficient. So the number of molecules in the slow step, that will be the order. Usually that is one. ठीक है, so we did mechanisms, we did questions on that, and then we did the whole ये वाला part. हाँ ठीक है, तुमने questions भी किए थे काफी. So what we'll do is we'll just do more questions, ठीक है, and after that, I mean there's not, it's a pretty small topic, not a lot of things in it, ठीक है. तो ये लेटेस्ट है. और ये मैं सेंड भी कर रहा हूँ, एक सेकंड सेंड कर देता हूँ. अच्छा, लेटेस्ट वाले में I've sent the latest ones. So starting with the first question, the rate of the reaction between, I mean, this one and this thing, ठीक है? तो ये this is the two things that are reacting together. ठीक है, so it's this versus this. So the rate must be dependent on either one of them, ठीक है, whatever the order is. So when a large excess of methanol is used, the overall reaction is first order. तो अच्छा, ये मैंने explain किया था, when you use a large excess, ठीक है, when you use something in large excess, what happens to its concentration? क्या कहा था मैंने? किसी को याद है हुमैद? What happens if you use a large excess of something? ठीक है, उसका था कि concentration becomes constant. ठीक है, when you use एक चीज अगर आप बहुत ज्यादा यूज करोगे ना, तो that means that it's not going to get used up. ठीक है, अगर आप इसके 1000 moles यूज कर लो, तो maybe 0.1 moles get used up, so its concentration pretty much remains constant. ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर मैं इसकी if I write the rate equation right now, the rate equation is that there are two reactants. ठीक है, I'm going to call this one A and the other one B. ठीक है, just to simplify. अच्छा, so one of them is A, the other one is B. So rate depends on both reactants, right? A and B. Now what we don't know is, okay, what are the orders? I don't know how it's dependent on A. I don't know how it's dependent on B. ठीक है, right now I don't know what that is. लेकिन उसने कहा कि मेथनॉल को एक्सेस में यूज किया, so that means B is out of the question. ठीक है, so we're not, I mean B is constant, right? So basically we are trying to investigate, so basically at the moment we are trying to investigate the relationship between rate and the concentration of A. ठीक है भाई, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, we हेलो, सर। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, बस मैं थोड़ा सा बता दूं, ये बस खत्म हो गया टॉपिक. जो अगला टॉपिक है ना, इसमें वैसे लेक्चर्स भेज दूंगा, ठीक है, वो उसका परेशान हो ना.
अगला टॉपिक हम प्रॉब्ली कल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एक या कल या एक दो दिन में ना। तो ये बिल्कुल उसका एंड है, पास में उसका है उस टॉपिक के ना, पिछले वाले के। तो ये हम कवर कर लेंगे बाद में, वैसे मैं वीडियो लेक्चर्स भेज दूंगा। तो इसलिए अगर कुछ नहीं समझ आ रहा ना, कल या परसों ना लाजमी पूछ पूछ लेना। वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। समझ आ गई बात? जी ठीक है, वो उसमें फिर समझ आएगी। सर, हाँ जी। रिएक्शन काइनेटिक्स से पहले आपने कौन सा चैप्टर किया था? ये मैंने किया, वो सारे कर लेंगे दोबारा भी, एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ। ये दो है ना, दो एमएसी एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, ठीक है। और प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन कर लेंगे वो। चार टॉपिक्स उसके बाद दोबारा से पहले दो कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। क्योंकि इन सारे टॉपिक्स का ना आपस में कोई लिंक नहीं है, मतलब खास लिंक नहीं है। मतलब रिएक्शन काइनेटिक्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोई खास ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सो दे काइंड ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट। क्वेश्चंस भी मोस्टली इंडिपेंडेंट ही है। रिएक्शन काइनेटिक्स का क्वेश्चन अलग है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अलग है, एनर्जेटिक्स का अलग है, ठीक है। अच्छा चलो, ये थोड़ा सा अच्छा माइन, अगर कुछ भी ना समझ आ रहा हो ना, बेशक आप अभी चले जाओ, कल आ जाना, ठीक है। सही सर, ओके। ठीक है, ओके। चलो, अब ये कि ये एक्सेस में है, तो इसको क्विकली करें, ये एक्सेस में। सो दैट मीन्स रेट की रिलेशनशिप वी आर ओनली इन्वेस्टिगेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट। तो उसने कहा कि द ओवरऑल रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। उसका मतलब ये जब बाहर निकल गया तो फर्स्ट ऑर्डर, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज, आई मीन इसी इसी के ऑर्डर की बात कर रहा है ना, बिकॉज देयर इज नो वन एल्स, राइट। तो ये क्लियर है कि इट्स फर्स्ट ऑर्डर, एक्स इज वन। इज दैट क्लियर? खदीजा, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मुझे इस ग्राफ से प्रूफ करो कि इट्स फर्स्ट ऑर्डर। किस तरह प्रूफ करोगे कि उसने? सर, इज इट फाइंड द ग्रेडियंट, इज इट? नहीं नहीं, मुझे बताओ कि वो हाफ लाइफ मेथड क्या था, हाउ डू यू, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज द हाफ लाइफ? आपका इसका कांस्टेंट। कांस्टेंट होती है ना। सो दिस इज, मतलब you started off at point 2 to point 1, that's the half life, right? So it's something over here, ठीक है। ये पहली, that's the first half life। फिर second half life point 1 से point 005, that's ये, so kind of the same, ठीक है। फिर वो अगली दफा हाफ लाइफ, तो वो भी तकरीबन वही है, ठीक है। So the half life is constant. So saying use the graph to determine the rate of the reaction in 40 seconds, show all your working. खैर he didn't actually ask anything about half life, मैंने तो बस वो कहा था कि half life check कर लो, it is first order। Then he says use the graph to determine the rate of the reaction at 40 seconds। एक तो 40 seconds यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो अच्छा 40 मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट है। अब मुझे बताओ कि how would you measure the rate of the reaction over here? What you'll do is you'll draw a gradient, ठीक है। अब वो ग्रेडियंट ऐसा होना चाहिए कि, अब मैं रफ ग्रेडियंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से। तो उस ग्रेडियंट को ऊपरी तरफ भी, चलो मेरे ख्याल से ये रफ रफ ग्रेडियंट। सो y2 minus y1, x2 minus x1, तो हमेशा always draw when you draw a gradient, ठीक है। clearly this is I think this is the 40-second mark। तो इसके अंदर वर्किंग सारी शो करनी है। मेक श्योर यू ड्रॉ द लाइंस, ट्राइंगल जितना बड़ा ड्रॉ हो सकता है, मेक श्योर यू ड्रॉ अ बिग इनफ ट्राइंगल। तो व्हाट्स द y एक्सिस, y2 minus y1, दैट्स आई थिंक पॉइंट, क्या होगा ये, 0.014 अप्रोक्सीमेटली, राइट। और x एक्सिस क्या, दैट्स ये कितना आ रहा होगा, दैट्स 85, 88। 90। हाँ 90 भी कह सकते हैं, एक तो वो वैल्यू तो कोई भी नहीं लिखी हुई। तो लेट्स से मैं 88 कर लेता हूँ, 88 सेकेंड्स, राइट। सो दिस इज यूनिट्स का ख्याल रखना। टॉप वन वाज y एक्सिस वाज मोल per dm क्यूब। तो कैलकुलेट करो, व्हाट डू यू गेट?
concentrate minus 10 power नहीं आवाज break कर concentrate and 10 power minus नहीं आवाज कट रही है किसी और ने अहमद किया साथ 1.59 times 10 raised to power -4. -4 ठीक है खदीजा माइक थोड़ा मेरे ख्याल से खराब है आपका भी अच्छा सो ये तो आसान था बिल्कुल अच्छा यूज टू ग्राफ टू शो दैट द ओवरऑल रिएक्शन ये इधर वो वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट था ना दिस इज योर आंसर यू जस्ट गोइंग टू स्टेट दैट द हाफ लाइफ इज कांस्टेंट उसके लिए भी ना मेक श्योर यू स्केच द लाइंस ठीक है ये स्केच करो लाइंस ड्रॉ इट विद अ रूलर एंड शो देम कि भी दिस इज योर फर्स्ट हाफ लाइफ फिर वो अगली वाली भी जो थी दैट्स ऑलमोस्ट द सेम देन द नेक्स्ट वन वाज ऑलमोस्ट द सेम ठीक है सो ऑल योर हाफ लाइव्स वर कांस्टेंट तो इधर और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना that's about it now in a different reaction which is also a first order reaction अच्छा हाँ ये थोड़ा सा ना in a different reaction which is also a first order reaction 75% of the reactant is consumed तो वो कह रहा है कि it's a first order reaction so let's say A is the reactant it's a first order reaction वो कह रहा है कि 75% of the reactant is consumed in 320 seconds तो calculate the rate constant K for this reaction state the units of K अच्छा एक चीज इसमें I haven't told you वो एक और formula which I haven't told you yet लेकिन I'll explain I'll tell that formula in a short while इसमें tell me first thing कि based on this information can you tell me what the half life is इसको छोड़ दो ये नीचे वाला part 75% of the reactant is consumed in 320 seconds can you tell me what the half life is 160. ठीक है और क्यों 160 क्यों है Because 75% would be second half-life. हाँ ठीक है 75% सेकेंड हाफ लाइफ है ठीक है तो ये तो दिमाग में बिठा लेना मैं फिर समझा देता हूँ ठीक है बाकियों को सी दिस इज बल्कि दिस इज 100% राइट फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या होता है यू ड्रॉप टू 50% सेकेंड हाफ लाइफ 50% का भी हाफ हो जाता है यू ड्रॉप टू 25% तो 70 जब आप सेकेंड हाफ लाइफ में पहुंचते हो ना दैट्स 25% और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में द हाफ लाइफ आर कांस्टेंट राइट तो जब वो कहता है ना 75% ऑफ इट हैज बीन कंज्यूम्ड तो इसका मतलब है कि दैट्स टू हाफ लाइव्स ये बात क्लियर है सारों को क्योंकि फर्स्ट हाफ लाइफ में 50% कंज्यूम होगा देन दैट 50% उसका फिर दोबारा 50% हो जाएगा सो यू विल बी लेफ्ट विद 25% तो 75% ऑफ द स्टफ गेट्स कंज्यूम्ड इन द फर्स्ट टू हाफ लाइव्स ठीक है क्लियर है ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर साले इज दिस क्लियर खदीजा Yes, sir. ठीक है सो that's basically equal to two half lives तो इसका मतलब है two half lives are he told you the time for two half lives 320 seconds and in a first order reaction the half lives are constant ठीक है so both half lives would be exactly the same value तो वो फिर 2 को उधर ले जाओ तो the half life is basically 160 seconds so the half life is 160 seconds अच्छा अब इसमें ना there's one extra formula which we it's just a formula ठीक है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए मैंने कहीं लिखवाया भी था शायद और मैं कैम्ब्रिज का लेटेस्ट वाला क्योंकि इसकी डिफरेंट वर्जन्स फॉर्मूला की एग्जिस्ट करती है जस्ट अ सेकेंड टी हाफ की नहीं ये नहीं
हमारा ये नहीं, नॉट इनका वाले फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जैसे सेकेंड 9701। अच्छा, ये थोड़ा सा ना इस पे ना, जब बाकी भी टॉपिक्स में ना, व्हेन यू सर्च द इंटरनेट, ठीक है, बी अ लिटिल बिट केयरफुल अबाउट द इंटरनेट। उसकी रीजन ये कि कुछ चीजें जो है ना वो बहुत एडवांस्ड होंगी, तो वी डोंट लाइक, जैसा ये वाला टॉपिक है ना, अगर इंटरनेट पे जाओगे ना, बहुत सारी जगहों पे ना, द स्टफ वुड बी वेरी एडवांस्ड। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि कहाँ से ना आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो फॉर्मूलाज वगैरह भी। सो विच इज वाई आई जस्ट ओपन उनका सिलेबस ही ओपन करूंगा, आई नॉट लुक फॉर फॉर्मूलाज अदरवाइज, ठीक है, क्योंकि वो फिर बहुत एडवांस फॉर्मूलाज बीच में आ जाते हैं विच आर नॉट इन आवर कोर्स। तो अच्छा, एग्जैक्ट फॉर्मूला जो कोर्स में ना, दैट्स, अच्छा वो कोर्स में ही नहीं है आई थिंक, नहीं है पॉइंट्स। हाँ ठीक है, ये मैंने देखा था, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। अच्छा, लेट मी टेल यू व्हाट द फॉर्मूला इज। फॉर्मूला ये कि इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो किधर गया हाफ लाइफ, अच्छा फॉर्मूला ये है कि जो के है ना आपका, जो रेट कांस्टेंट है, इफ यू हैव अ हाफ लाइफ इक्वेशन, तो उसका एक फॉर्मूला विच इज 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। कि इफ यू नो द वैल्यू ऑफ द हाफ लाइफ, तो हम के की वैल्यू जो थी ना, वी कैन कैलकुलेट इट एक्सपेरिमेंटली। के वाज द कांस्टेंट, ठीक है, रेट इक्वेशन में देयर वाज अ के दैट वाज अ कांस्टेंट, but in a first order reaction it could be calculated using this formula as well, ठीक है। So it's 0.693 divided by t half. If you know what t half is, you can find k. You can find it experimentally as well. Experimentally, remember हमने we did find it out experimentally। क्या करना था कि if you've done an experiment, कि अगर मैं नीचे जाऊं ना, experimentally k कैसा निकालते हैं कि if I want to find k, what I'm going to do is I know the किसी एक रिएक्शन की डेटा जो है ना, put it in the equation and you'll be able to find what k is, ठीक है। that was one method, while the other method is ये जो अभी मैंने लिखवाया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना, the question that we were doing, हमें t half पता लग गया था, so k can be found directly by just using this formula which is 0.693, उसको डिवाइड क्या करना है, डिवाइड बाय 160 सेकेंड्स। बात क्लियर है, ये फॉर्मूला आया कहां से, इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, उसकी जो शेप है ना ग्राफ की, उससे डायरेक्टली उन्होंने डिराइव किया हुआ है। इट डज नॉट वर्क फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, इट डज नॉट वर्क फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, इट ओनली वर्क्स फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो और इसका जो यूनिट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, सो दैट इज क्या होगा, ये टाइम है सेकेंड्स, एंड दिस वाज अ कांस्टेंट, राइट, इट्स ऑलवेज s-1। मतलब ये तो कांस्टेंट था ना ऊपर, इसका यूनिट था ना 160 सेकेंड्स। So for a first order reaction, it's always s-1. अच्छा, अगला अगला क्वेश्चन, homogeneous catalyst, heterogeneous catalyst, so explain what is meant by the following terms, ठीक है, you did this in AS. Homogeneous means same phase as the reactants, catalyst has the same phase as reactants, ठीक है। Heterogeneous catalyst has a different phase compared to the reactants. अच्छा, catalyst has a different phase from reactants, right?
फिर there is one example that has to be remembered for homogeneous catalyst. और वो उससे मेरे ख्याल से electrochemistry is only not done by अच्छा I'll explain this one. ये वाला हमने electrochemistry में किया था this one. कि ये दोनों में common है. Just 1 second, let me just check. अच्छा ये वाला मैं एग्जाम्पल जो है ना होमोजेनस और हेटेरोजेनस इसका एक एग्जाम्पल याद रखना है. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट होमोजेनस कैटलिस्ट एट द मोमेंट. अच्छा there's this one very specific example. और ये AS में clear है ना. Homogeneous catalyst is that the catalyst has the same phase as the reactant or same state. अच्छा so there's this one particular reaction that happens. Electrochemistry में हमने पढ़ा था कि the higher potential gains electrons and the lower potential loses electrons. Now there's this reaction which is S2A2 minus plus 2 electrons. There's this electrode. It's 2SO4 minus 2 and this one has a potential of 2.01 volts. Okay. There's another reaction which is I2 plus 2 electrons and that's in equilibrium with 2I minus 1. Okay. This one is 0.54 volts. अब electrochemistry हमने पढ़ा था कि the higher potential is the one that likes to gain electrons, ठीक है, and the lower potential is the one that likes to lose electrons, ठीक है, you get a reaction. So the higher potential gains electrons and the lower potential, यानी इन दोनों को अगर आपस में react करोगे ना, the higher one gains electrons, S2 it will gain electrons, I minus 1 would lose electrons. And I can do is I can make an overall equation based on these two. Overall किस तरह बनेगी कि overall would be कि you just add them up. तो reactants को add up कर लो. The reactant over here is S2O2 minus. The reactant that's over here, that's 2I minus 1. और दोनों के products को figure out कर लो. ऊपर वाले में it's 2SO4 minus 2. और नीचे वाले में it's I2. अच्छा, anyways, you end up with a reaction. The reaction is very feasible because there's a huge difference in potential. Higher potential minus lower potential, 2.01 minus 0.54. तो क्या value आ रही है? That's 1.47 volts. So that's kind of very feasible. Also बहुत feasible है. So higher gains and lower losses, right? And the catalyst has the same phase as the reactant. तो ये पहला part मैंने किया कि you've got a very very feasible reaction. ठीक है? तो ये एक redox reaction है. Reduction and this is the oxidation. ये clear है कि there's this reaction happening. Is this clear? Yes. So now there's an issue. This reaction, even though it's very feasible, it's got higher potential इसका बहुत high है, lower potential is very low. It should happen theoretically, but it does not happen. मुझे तो what is wrong with the reactants that the two of them are not going to react? but यहाँ पे look at the reactants ये वाले. You get no reaction. क्या reason हो सकती है? I mean, just common sense. Look at both reactants.
ये दोनों reactants are negatively charged. ठीक है, both reactants अच्छा, both of your reactants are negatively charged. अब negatively charged का मतलब है कि they repel each other. यानी that means कि they're never going to meet each other. So if they're never going to meet each other, there's not going to be any reaction. ठीक है, अब जिन्होंने electrochemistry नहीं पढ़ी ना, just remember that there's this reaction. It should happen, but it doesn't happen because both of them are negatively charged, and you get no reaction because they never meet each other. Is that clear? ये clear है? कि why is there high activation energy? Okay. Yes. अच्छा, how does the catalyst help in this? तो catalyst क्या करेगा कि ये दोनों तो react कर नहीं रहे, ठीक है? So the one of them is not going to gain electrons, the other one is not going to lose electrons because they're never going to meet each other. तो इनका क्या होगा? So what's going to happen is, because they're never meeting, so this is not going to happen. So instead now what happens is you add a third substance, which is iron ions. Let's say you add Fe3 plus. Now this is 0.77. So now this one is 0.77 volts, right? अब इसमें क्या होगा? Now remember, the first equation is not going to react with the third equation. I told you the reasons for that. लेकिन वो जो first वाला है ना, S28, because that's the higher potential, this is the lower potential, तो reaction अभी भी होगा. The first one gains electrons, right? While iron ions will lose electrons. Now what iron ions are doing is iron ions are going to go, they're going to react with the first one and a reaction will start. ठीक है, तो और इसको मैं डबल कर देता हूं ताकि इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस्ट आर इक्वल. अच्छा, so you got S2A 2 minus. अच्छा, फिर you got 2 Fe2 plus. और प्रोडक्ट में you got 2SO4 minus 2 और दूसरा 2 Fe3 plus. अच्छा, so you got this reaction going on. ठीक है, I added up 2 Fe2 plus was the reactant, S28 was the reactant, ये product and this is the product. So I just put them together. So these two are reacting with each other. I said the reaction between iron ions and S28 is very fast. Why is it very fast? Because now both of them are oppositely charged. जिसका मतलब है they're going to attract each other and they're going to meet and they're going to react. They're going to transfer the electrons. This one would lose electrons, that one would gain electrons. ठीक है? I said the same iron ions over here, they're also going to go and they're going to react with iodine. अब iodine के साथ ये होगा कि iron ions are the higher potential. So higher potential gains electrons. 1 second. अच्छा, iron ions जो है ना, they have now become the higher potential. So अच्छा, so iron ions gain electron and I minus 1, the lower potential, loses electrons. ठीक है, तो अब ये हो रहा है कि the same iron ions when they go to iodine, you get this reaction. You get 2 Fe3 plus, or the other one is 2I minus 1, and the product is 2 Fe2 plus, और दूसरे के अंदर the product is I2. ठीक है, ऑरेंज वाले एरो को देखो. So iron ions are now the higher potential, iodine is the lower potential, so iron ions gain electrons and iodine loses electrons. Fe3 plus turns to Fe2 plus, Fe3 plus turns to Fe2 plus, I minus 1 turns to iodine, I minus 1 turns to iodine. ठीक है, you get this second reaction. तो iron ions कर क्या रहे हैं? Iron ions are
independently going and reacting with both of them. Ye pehla wala was not reacting with the third one, right? So iron ions went and reacted with the first one. Iron ions went and reacted with the second one as well. Now, if you look over here, तो iron ions को क्या हुआ? You started off with Fe2 plus, that turned to Fe3 plus, and then that same Fe3 plus in the next reaction turned back into Fe2 plus. इसका मतलब है कि the iron ions they remain unchanged overall. Is that clear? ये clear बात? Yes, sir. Yes, sir. So the iron ions remain unchanged. And you still get your both products. The S28 got converted to SO4 minus 2. The I minus 1 got converted into I2. It just happened in two different steps. ठीक है, तो iron ions ने क्या किया? They provided an alternate path. This and this were not reacting together because they both were negatively charged. They were repelling each other. You added iron ions. So this equation reacted with iron ions. This equation independently reacted with iron ions. You got two different reactions. But at the end of the day, you got the same products and exactly same products. You got much faster reaction. Why? Because it's oppositely charged ions. Why? Because you've got oppositely charged ions which attract each other. तो वो सारी एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वो डिक्रीज कर गई है. ठीक है. सो रिमेंबर वो जो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ बनाते थे ना, व्हिच यू मेड इन ओ लेवल्स, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज अ डिफरेंट रीजन. some reasons could be very simple. ठीक है, जैसा यहाँ पे था, उधर दोनों आयंस नेगेटिव थे, but now both ions are oppositely charged. So all of a sudden it becomes much easier to react. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है होमोजेनस कैटलिस्ट का, which you have to remember. I mean, you have to remember the whole thing. Or specifically because they ask you about the question about this, and he says write to equation to explain how this reaction is catalyzed by Fe2 plus. So we just did that. वो ये वाला part है. These two equations. और फिर इसी तरह ना, suggest why the alternate route in the, it's the same question every time. It's the same question. यानी इसके अंदर कोई creativity नहीं होगी. You just have to remember this specific example. That's it. Suggest why the alternative route in the presence of iron ions has a lower activation energy. तो बता दो कि it's oppositely charged ions which attract each other. ठीक है. तो बस ये अगला जल्दी से कर लेते हैं. पिछला क्लियर है ना? ये बस आपको रट्टा लगाना होगा. That would be it. ठीक है. You just have to memorize this stuff. ठीक है. और ये बस करो. Reaction is second order with respect to NO and first order with respect to, तो बस equation लिखो. So it's a constant. NO का वो कह रहा है कि क्या है? It's second order. And O2 के respect से it's first order. अच्छा, उधर से first order है. And he's given you the rate constant as well. Whoa, that's already given. So he's saying calculate the initial rate. So you just have to calculate the initial rate. The values are given, so I'm just going to plug in the values. K की value क्या थी? 8.6 times 10 to the power 6. अच्छा, फिर initial concentration. NO की 7.2 times 10 to the minus 4. And that's squared. और O2 की ना 1.9 times 10 to the minus 3. That's power 1. ये बस कोई मुझे इसकी वैल्यू बता दो. What's the rate of the reaction?
Sir, 8.47 times 10 power negative 3. अच्छा -3, that's it, ठीक है। फिर saying the reaction has a constant half-life. Okay, explain why this is the case. It's a first order reaction, that's it, ठीक है। That is what the case is. It's clearly a first order reaction. और फिर वो कह रहे कि show that the half-life of the reaction is this. K की value given, इधर वही formula होगा। K क्या था? That was 0.693 divided by T half-life. So the value of K is given. So you can, I guess, calculate the half-life using this formula. Is that clear? Yes. Yes. चलिए ठीक है। ये करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। कल ये वाली वर्कशीट अभी करते हैं, ठीक है। उसके परसों पे हम स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक, ठीक है। चले, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Sir, can you send me notes for kinetics? Sir? ठीक है, एक सेकंड में अभी भेज दूंगा सर। Okay, thank you, sir. ठीक है, मैं भेज दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।